आज हमारा टॉपिक जो गुफ्तगू का ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे जो बात की वो थी कतरा कतरा समंदर। यानी अमल थोड़ा हो लेकिन मुतवातिर हो, उसका असर होगा और उसका जो है वो नफ़ा जो है वो देर पा होगा। और यही कुछ सूरत हाल नाजरीन सियासी सफ़र में भी होती है। और ब्रेक के बाद मैंने जो है वो आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सुमेरा मलिक साहिबा, जो कि ओंटारियो लिबरल पार्टी की कैंडिडेट हैं फ्रॉम द राइडिंग ऑफ मिसिसागा सेंटर। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Walaikum salam. Thank you so much for having me. कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसे रोज़े आपके गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं, बिजी गुजर रहे हैं लेकिन अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छे Uh, गुजर रहे हैं। थोड़ा सा अब हमारे नाज़रीन को यू कैन टेल अस लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, योर बैकग्राउंड। Yeah, so I'm one of the youngest candidates in the party. Completed a double degree in BBA in management and a BSc in neuropsychology. I was about 13 years old when I started volunteering in the community, different homeless shelters, hospitals, medical clinics. तो मुझे helping hand बनने का बहुत शौक था since I was very young. And Ontario Liberal Party introduced 30 under 30, and that kind of helped me or encouraged me to get involved, and that's how I went on to become a candidate. Very good. So 30 under 30. So you're one of the 30 under 30, and from our perspective or the party perspective, you are the youngest candidate for Ontario Liberal Party, right? Yes. बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। सो दैट इज़ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा अपनी राइडिंग के हवाले से बता दें, जो है वो ये कहाँ पे है राइडिंग, इसकी बाउंड्रीज क्या हैं और कोई अगर डायनेमिक्स अगर आप शेयर करना चाहें। Yeah, so Mississauga Center एक बहुत beautiful riding है. We currently have Minister Omar Al Gabra as our federal MP, so it is his riding. Um, this is Central Square One, so सारी Square One की जो area है, buildings हैं, वहाँ तक boundary है, Bristol तक boundary है. Mavis and Eglinton as well as a major intersection. It's a very dynamic constituency. बहुत सारे different वहाँ पे ethnic communities रहती हैं. Pakistanis भी हैं, Filipino भी हैं, Urbi भी हैं. So it's very diverse, and I'm very proud to represent such a diverse community. वेरी गुड। और इलेक्शन होने हैं जून की 2 तारीख को, जी. और ईद जो है वो एक्सपेक्टेड है मई की 2 को। तो यानी ईद हमारी होते ही जो है वो हमें फौरी अपना माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा इलेक्शन की। तो मैं बात कर रहा हूँ वोटर्स की। लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी आई थिंक यू आर वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन knocking doors. So how's the situation these days in month of fasting? Are you going out to see your donors? Yes, I am. About 4 or 5 times a week, we do door knocking. Door knocking क्योंकि election का time बहुत close आ रहा है, so I understand कि रोजे हैं, लेकिन I really appreciate कि लोग फिर भी आते हैं, they come help me knock doors. हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा evening में रखें, especially weekends को, just to make it easier on everyone. Yeah. लेकिन I know कि रमजान की वजह से काफी it's very difficult, it's very hard. लेकिन we have to keep the momentum going क्योंकि time बहुत short है. So door knocking is not stopping. Door knocking is going, and I encourage people कि please get involved. आपका अगर कोई local candidate है या आपकी riding से, please go volunteer, help them. आप 1 hour भी निकालें, 1 hour भी बहुत ज़्यादा होता है. It's very helpful. Very good. I Um, think it's a great opportunity for our younger kids, those who want to volunteer and build their volunteer hours. So that is a wonderful option available to them. So सुमेरा, मुझे ये बताएं कि लास्ट इलेक्शन में 2018 में जब लिबरल पार्टी लॉस्ट द इलेक्शन, और हमने देखा कि बहुत सारा लिबरल का वोट जो है वो स्विंग्ड टुवर्ड्स एनडीपी, and maybe some went to conservative party, and that's why Doug Ford became the premier. तो अभी जब आप डोर नॉकिंग कर रही हैं तो आपको क्या फील मिल रही है? आर यू सीइंग योर सपोर्ट? व्हाट यू आर सीइंग? Okay. जब मैं शुरू में कैंडिडेट बनी थी ना, this was about two years ago. उस वक्त जब मैं डोर नॉकिंग करती थी तो मुझे तब भी लगता था कि Ford was still very popular at that time, but I've noticed a massive shift. Like, to be honest, मैं जब अच्छा। डोर नॉक करती हूँ, I receive very positive feedback. I think people are ready for change again. I think when Ford government came into power,
people wanted change. They wanted to try something different, and they did. They tried during the pandemic, and they saw the result of that. The result was very poor management within our healthcare system, within our education system, economy. So I think people are now ready for change again. I think the Liberal Party has worked really, really hard to rebuild themselves and come out with strong policy. हमारी वो take the mic process थी जिसमें हमने लोगों से पूछा था कि आप कौन सी पॉलिसी चेंजेस देखना चाहते हैं तो हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं जो लॉन्च होंगी closer to election time is based on what the people of Ontario said that they wanted. It wasn't just based on what the party decided. It was just hearing what constituents wanted throughout Ontario. So I think लोग उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं. They're happy कि we heard them, we listened to what they wanted. तो उस तरीके से I see positive change. लेकिन when I go to the doors, I get positive responses. I feel like people are kind of done with Doug Ford now, especially in my constituency. That's what I see currently. No, thank you for sharing your insight. And you just spoke about कि आपका जो पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, जो पॉलिसीज हैं, they will be released close to the election date. Maybe I'm hoping that first week of May. But is there any insight that you might want to share with our viewers? What would be some obvious things that you and your party would be, taking to the election? So I think one of the biggest things was we're reinvesting in education, back in education. Ford government ने education में बहुत cuts किए थे, and I think as parents or grandparents or even peers, you want to see कि education में कोई cuts ना आए, कोई कमी ना आए. You don't want to compromise on your children's education, so I think we promised that, which was a big thing. Also support for small businesses. So Stephen Del Duca has promised that he will help reinstate a better economy through small businesses. Childcare policy, which is very important. We were the only province in all of Canada that didn't sign a $10 a day childcare deal. Uski wajah se काफी parents जो हैं, they're struggling. They pay thousands of dollars a month for childcare. They can't go to work. So those are the one of the things that we're going to see. And then I know that there's going to be more economical benefits that are coming out. So you'll see that in the next week or two, I believe. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, आपने अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि आपको it's been already 2 years since you have become the candidate. Is that Yeah, how much it is already? I think so. Yeah, it's been about a year and a half, 2 years, almost 2 years, I Wow. would say. टाइम Yeah. इज फ्लाइंग. तो मुझे ये बताएं कि जब आपकी जो है वो जब आप शहर इस बारे में सोच रही थी, मेरी भी आपसे मुलाकात हुई और लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई. फाइनली यू पुट योर नेम फॉर द नॉमिनेशन, यू वॉन द नॉमिनेशन, हियर यू आर. तो अभी ईयर एंड हाफ फास्ट फॉरवर्ड, is that experience is as expected, or you've got something that you want to share with our viewers that you would have loved to see something even better or different? The one thing I can say is shuru mein when I was going to become a candidate, it could be nerve-wracking in the sense मुझे लगता था कि okay, because, or I would hear it a lot, oh, you're very young, right? And that kind of creates doubt as well. Okay, oh, will the community support and accept, especially if you're young? But to be honest with you, मैंने 2 साल में देखा है कि the mentorship, the advice, and the help that this community gave me, our community, was amazing. मैं शायद इतना शुरू में expect नहीं कर रही थी. मुझे लगा था कि बहुत time लगेगा to get to this point. लेकिन I see people talking about youth empowerment. I see people talking about कि कितना important है कि young people भी आगे आए. Even in my campaign, door knocking, I see so many people who come who are young. Majority of my team is like, to be honest, it's a lot of youth, and that makes me happy. It makes me happy that they want to get involved, they want to impact policy. So even हमारे community में बहुत से leaders हैं, they have so much experience, 20 years experience, and everything that they've taught me, like they themselves have gone out of their way to sit me down and mentor me and teach me. So that makes me very proud as a candidate. I was very happy to see that. No, this is very encouraging to hear, and I know your father Salim Malik Saab is very proud of you and your success.
And obviously, not only himself and the entire community is looking to see you becoming successful, on June 2nd from the riding of Mississauga Center, so we can, celebrate one more win from the Pakistani community living in Canada. Yes, Thank you and so much, Sumera, for your time thank today. you. Thank you so much for having me. जी नाज़रीन, ये हम बात कर रहे थे सुमारा मलिक साहिबा से, जो कैंडिडेट हैं ओंटारियो लिबरल पार्टी के टिकट पे। इन्हें जो है वो कैंडिडेसी मिली है मिसिसागा सेंटर की राइडिंग से। जून की 2 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी तो कहा तो ये जाता है कि जो है वो ओंटारियो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी काफ़ी मजबूत है और मुमकिन तौर पे ये दोबारा जो है वो इलेक्शन विन करेगी। बट टाइम विल टेल। फर्स्ट वीक ऑफ मई में होपफुली इन पार्टीज़ के प्लेटफॉर्म्स रिलीज़ होंगे, फिर देखा जाएगा कि किसका मंशूर क्या है और अवाम की सपोर्ट किस पार्टी के साथ है और इलाकों में किन किन कैंडिडेट्स के साथ है। बहरहाल सुमेरा मलिक मिसिसागा सेंटर की राइडिंग से हैं। वो लोग जो मिसिसागा के रहने वाले हैं, ख़ास तौर पर मिसिसागा सेंटर के, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इनके साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं, इनको सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो है वो जाके इनसे इनके कैंपेन ऑफिस में मुलाकात भी कर सकते हैं।